Greetings from SDMIC classes. Nothing is impossible for a brave and hardworking person with a willing mind. And students must have the qualities of desire, decision, and determination. These 3 Ds are required to achieve the goals in life. Chapter 2, Accounts of Not-for-Profit Concern. This is Class 1. Hope you must have watched my previous classes, Chapter 1. I believe you all must have understood. That was an introduction to partnership and partnership final accounts. That was an introduction. Now we'll learn in detail partnership, because it's a vast subject. Now before that we have to learn what is a not-for-profit concern, and why the accounts are prepared, what are the importance of that, which are the concerns of not-for-profit concern, and what is the meaning of that, and what are the features of that, why accounts are prepared for that, what is the necessity. All these things we must know. So in this chapter 2 we will learn accounts of not-for-profit concern. When you come across when you go to higher studies, and then that time now you will come to know in detail when you are going to do CA or going for audits and finalizing accounts and various types of accounts you will come across. So there you will come to know that means that audits of trusts and societies, cooperative credit society, cooperative housing societies, and cooperative business societies. Like for example, Sakari Bandar, some society conducts some business, like means for the purpose of giving benefits to the members and public. This is service to society. That is the reason that the meaning is not for profit. Is not to make profit. That is the reason it is called as not for profit concern. Okay, so you will come across various types of this type of accounts, like so that you have to audit and finalize and prepare the audit reports and all these things. When you go for higher studies, you have to see. You will see this. But in this class, we will see the basics and see. When you study this, it is almost you can understand. You will understand. What is not-for-profit organization? That's the base, and from that now there will be a little bit more expansion only. Otherwise, the base is same, and how to prepare the receipts and payments account and balance sheet, and what are the basic things means once you learn that and you can do it in a higher level of this accounts also, but it won't go beyond a particular limit. So it is, when you study this, it is almost 90% is covered here itself. So it's a base for your further studies and higher education and all this thing. Okay, so let us continue. I request you all to pay attention. Let's have a look what you will learn. The chapter 2, Accounts of Not-for-Profit Concern. Contents. First we'll learn what is introduction, what is that not-for-profit concern, meaning of not-for-profit concern, features of not-for-profit concern, difference between profit organization and not-profit organization. You must know that now. What is the difference between a profit-making organization and not-for-profit organization? That you must understand. Need for maintaining books of accounts and preparing final accounts, meaning of receipts and payments account, features of receipts and payments account, types of receipts, capital receipts, revenue receipts, types of payments, capital expenditure, revenue expenditure. This you already learned in this in the chapter 1, introduction to partnership and partnership final accounts. And from the 11th standard also, these types of things, your capital receipts, revenue receipts, capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure, all these things you have learned in the chapter 1 itself, chapter 11th standard. Okay, these are the basic things. It was explained there in chapter 11, in the 11th class. Now then this is a capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure, specimen of receipts and payments account, meaning of income and expenditure account, features of income and expenditure account, specimen of income and expenditure account,
distinction between receipts and payments account and income and expenditure account, preparation of income and expenditure account, preparation of balance sheet. Now implied adjustments like what we done in the introduction to partnership and partnership final accounts. There was various adjustments, various adjustments in the final accounts. That is that we have to learn. Capital fund, specimen of balance sheet, additional information means outstanding and prepaid expenses, subscription received in advance and outstanding subscription, depreciation, capitalization of entrance fees, creation of special funds out of donation, stock of stationery, opening balance of assets and liabilities. Then important terms: entrance fees, subscription, legacy, life membership fees, sale of old assets, scrap newspapers, etc., specific donations, etc. Now these are the things we are going to cover in this. Okay. Now general donation, the specific donation, endowment funds. Then you will have the competency. That students will be able to understand the meaning and the features of not-for-profit concern, know the meaning of receipts and payments account, understand the meaning of income and expenditure account and its difference from profit and loss account, understand the difference between profit and not-for-profit organization, learn to acquire the skills of preparing income and expenditure account and balance sheet of not-for-profit concern. Now let us start with that introduction. There are two types of organization: trading organization or profit-making organization, and non-trading organization or not-for-profit organization. So the difference now you must know. For example, means any small vegetable seller or a fruit seller, anybody, panwala, any shop, means a grocery shop, any types of business, they are kept for making profit. That कोई जो बिज़नेस क्यों करता है? प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए. फुकट में कुछ ये नहीं करेगा. तो ऐसा बोलता ना बीच में, मीन्स कोई ऐसा बोलेगा तो बोलेगा मैं तो चैरिटी नहीं कर रहा हूँ करके. ऐसा जो धंधा करने वाला तो चैरिटी नहीं करता है, बिजनेस करने वाला चैरिटी नहीं करता है. चैरिटी मीन्स फ्री, फॉर फ्री समथिंग. So these type of those business organization make the profit are profit making organization, that are trading concerns. Whereas the second type of organizations are non-trading organization. They are for the purpose of not for making profit, not for profit organization. Now the trading organization's main objective is to earn profit. They are engaged in trading activities, that is buying and selling of goods and services. Organizations like sole trading concern, partnership, cooperative organization, partnership business, public limited company, private limited company, or any types of business activities are set up for the purpose of making profit. It is clear? Means any type of business, like means that's a small sole trader, means that जो ownership में जो business जो करते हैं, sole trader, trading business. Okay, proprietary business, that is sole trader. Proprietary business, then partnership business, then cooperative organizations, they are also making some for the purpose of making some profit for the members and the public or the for the organization. Then private limited companies, public limited companies, etc. are set up for the purpose of making profit. The final accounts, which consists of trading, profit and loss account and balance sheet, are prepared. Base of final accounts is trial balance. From the trial balance, it is these final accounts are prepared. That we have learned in the chapter 1, introduction to bookkeeping, introduction to partnership and partnership final accounts. Some parts we learned. In detail, we will learn further. Okay. Now this is the thing that you must understand this. So large organization like manufacturing organization, only trading organization, buying and selling only. These are the things, and they all are made for the set up for the purpose of making profit. Now,
what is a not for profit organization? Not for profit organization's main aim is to give service to its members or to the society at large. जो members को जो service देने के लिए या सोसाइटी को सर्विस देने के लिए जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, दे आर नॉट फॉर्म्ड फॉर मेकिंग प्रॉफिट. उसका मीनिंग, उसका मतलब, वो जो सेटअप करने का मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाने के लिए, मीन्स जो प्रॉफिट बनाने के लिए, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. उन लोग, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करता है. दे प्रोवाइड द सर्विस. दे आर सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस टू इट्स मेंबर्स और टू द सोसाइटी. Now, examples of these not-for-profit organizations are sports club, charitable hospital, schools, colleges, universities, trade units, chamber of commerce, professional institution, trust, social welfare association, religious concerns, libraries, etc. are examples of not-for-profit concern. They maintain the books of accounts in a different way. जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो बुक्स ऑफ मेंटेन करने का तरीका कुछ अलग होता है. इसका जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का कुछ अलग मेथड से करता है. वी विल कम टू नो. मीन्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. इट इज़ वेरी इजी once you just focus on this. As their motive is not to earn profit, not for profit concerns do not prepare profit and loss account. अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट नहीं कमाने का है, मीन्स जो इनकम नहीं, मीन्स जो प्रॉफिट नहीं बनाने का है, तो फिर देन देयर इज़ नो नीड ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इंस्टेड उसके बदले में दे प्रिपेयर ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंडिचर. ये क्यों बनाता है? क्योंकि उसका मेंबर्स, जो सोसाइटीज़, जो मेंबर्स रहते हैं, उनको जो बताने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन को उसको ऑडिट के अंडर आएगा, तो ऑडिट में जो उनको दिखाना पड़ेगा. मतलब जो और मेंबर्स को जो एजीएम, मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग, ये सब जो होता है टाइम में, वे सब बताना पड़ेगा कितना मीन्स इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, और कितना सरप्लस है, कितना डेफिसिट है. ये सब जो चीज़ है वो बताने के लिए उसको they prepare an income and expenditure account. Similarly, they do not prepare a trial balance. उसके जगह पे what they prepare, they make a receipts and payments account. They do not make a trial balance, but instead they make a receipts and payment account. These organizations prepare balance sheet to know the net worth of the concern on a particular date. बैलेंस शीट तो सबको बनाना पड़ता है. मीन्स मतलब वो फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ने के लिए. इवन ट्रेडिंग मीन्स जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसको बैलेंस शीट नहीं बनाएगा तो उसमें क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या है, मतलब नेटवर्थ क्या है, कैपिटल, मतलब जो कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप और एनी वट एवर इट इज, शेयर्स, सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा, वो प्लस सरप्लस कितना है और लायबिलिटीज़ कुछ रहेगा, या एसेस में कुछ इनकम कितना है, कुछ मेंबर से कुछ लेने का कितना बाकी है, और क्या क्या है, क्या रिसीवेबल है, क्या एसेट है, ये सब मालूम पड़ने के लिए बैलेंस शीट तो बनाना पड़ेगा. फाइनेंशियल पोजीशन तो मालूम पड़ने के लिए तो बैलेंस शीट तो दोनों बनाता है, बैलेंस शीट तो बनाना पड़ता है. वेयरएज वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता है, उसके जगह पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है. ओके, उदाहरण मीन्स जो ट्रेडिंग कंसर्न में ट्रायल बैलेंस बनाता है या रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाता है. इट इज़ क्लियर, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर. नो, देयर इज़ नो डाउट, आई होप. The final accounts of not-for-profit concern consists of income and expenditure account and balance sheet. Whereas in the other thing, and the profit-making organization, it is trading profit and loss account and balance sheet. Here, in not-for-profit organization, final accounts of not-for-profit concern consists of income and expenditure accounts and balance sheet. It's clear? Now let us continue the meaning of not-for-profit concerns. इसका मीनिंग क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स आर दोज कंसर्न विच आर नॉट स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट बट टू गिव क्वालिटेटिव सर्विस टू इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी एट द मिनिमम चार्जेस. ये जो इसका मीनिंग ही होता है नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं बनाने का है, तो क्या है? सर्विस प्रोवाइड करें, सर्विस एट द मिनिमम
चार्जेस, कुछ मिनिमम चार्जेस में कुछ मेंबर्स को या नहीं तो सोसाइटी को कुछ सर्विस देने का है, दैट पर्पस के लिए ये जो प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सेटअप करते हैं. Now their main objective is to provide social service and to promote art, culture, sports, education, etc. The nature of these concerns are different from profit organization. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो प्रोवाइड सोशल सर्विस एंड टू प्रमोट आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, some services like means hospital services, medical services. Some you must have seen that some free medical camps like eye testing, some free spectacles देते हैं, चश्मा देते हैं, some medicines देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे services करते रहते हैं. Some art, culture like or trees planting, etc. Many types of services are there. That is for the purpose of the society. Yeah, that is for the purpose of society, service to the society. And art promote करने के लिए, cultural activities and sports development, education, etc. बहुत सारा. The nature of these concerns are different from profit organization. अभी इसका difference तो समझ में आएगा. Profit making organization का टोटली डिफरेंट है, और ये क्या है? जस्ट सर्विस टू द सोसाइटी. उसमें क्या क्या होता है? प्रमोट कल्चर, आर्ट, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एक्सेट्रा. बहुत सारा टाइप्स होता है. और ट्रस्ट का रहता है, और ट्रस्ट बहुत सारे एक्टिविटीज़ करता है, डोनेशन करता है, और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट्स लाइक बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते रहता है. ओके, सो यू मस्ट नो दैट. No, not for profit concerns collect incomes through subscription, admission fees, donation, etc. given by members or non-members and grants, subsidies or concessions received from the government. अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? दे कलेक्ट इनकम थ्रू सब्सक्रिप्शन. जो मेंबर्स से जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं और एडमिशन फीस लेते हैं और डोनेशन एक्सेट्रा कुछ लेते हैं, और गिवन एक्सेट्रा गिवन बाय मेंबर्स और नॉन मेंबर्स. और कोई समझो कोई बोलेगा चलो ठीक है आप ये जो काम कर रहे हैं तो समझो कुछ मेडिकल कैम्प कर रहे हैं, ठीक है. सब बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहता है, उनका CSR फंड रहता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वो कुछ डोनेट करता है, या ना कोई पब्लिक उनको डोनेट करता है, जो पैसे वाला जो रहता है. ठीक है, आप जो मेडिकल कैम्प कर रहे हैं, ठीक है, आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज़ या 5 लाख रुपीज़, जो आप उसमें ये काम कर लो, वो कुछ अच्छा पब्लिक रहता है ना, तो वो लोग देते हैं. तो दैट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? दैट ऑर्गेनाइजेशन वो पैसा लेके उसको जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट कोई गरीब का कोई समझो कुछ किडनी ट्रांसप्लांटेशन रहेगा, या ना कुछ ये रहेगा, या कुछ छोटा मोटा मेडिकल कैंप्स रहेगा, उसके लिए कुछ पब्लिक डोनेट करते हैं, और दैट डोनेशन इज यूज फॉर दैट पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्पस ओनली. तो उसके लिए वो जो फंड से लेके उसको करते हैं. दैट इज नॉन मेंबर्स. जो मेंबर्स नहीं रहेगा तो भी डोनेट करता है, या कुछ ये वो करके जो पैसा देते हैं, जो वो फंड्स लेके वो सर्विस करते हैं सोसाइटी को. सम ग्रांट्स, सब्सिडीज एक्सेट्रा एंड कंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट से भी कुछ ग्रांट्स, कोई जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट रहेगा या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ये सबको गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट्स भी आ जाता है, या कुछ ये आता है, तो उनसे लेके वो सब काम ये सर्विस सोसाइटी को सर्विस करते हैं, पब्लिक को सर्विस करते हैं. That is the purpose. So again I am reading, not for profit concerns collect income through subscription. उनका इनकम क्या है? सब्सक्रिप्शन, मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन और एडमिशन फीस और डोनेशन. और उसके अलावा नॉन मेंबर्स से भी कुछ डोनेशन या कुछ इनकम या कुछ आता है, या गवर्नमेंट सब्सिडीज आता है, ग्रांट आता है, ये सब लेके उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो पर्टिकुलर सर्विस करता है. ओके, नाउ फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स. The primary objective of such concern is to provide service to its members and not to earn profit. Is clear? Second, these concerns are formed for promotion of art, culture, education, sports, charity, health, etc. Third, the members of these concerns cannot get the dividend. It is prohibited. Fourth, management of such concern is done by elected representatives of members. It is governed by elected members. These concerns prepare receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet.
Now sixth, capital fund is created by such concerns. It is made up of entrance fees, surplus, legacies and donation, specially received for capital fund. Let us see one by one again features of not-for-profit concern. What is the first objective? Primary objective of such concern is to provide service to its members. ये तो हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है. The primary objective is to provide service to its members and not to make profit, not to earn profit. Second, these concerns are formed for promotion of art, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, चैरिटी, हेल्थ एक्सेट्रा. ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है. नाउ थर्ड, मेंबर्स ऑफ दिस कंसर्न्स कैन नॉट गेट डिविडेंड. अभी डिविडेंड बोले तो क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट. शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट इज डिविडेंड. ठीक है. डिविडेंड किस में होता है? मीन्स जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और लिमिटेड कंपनीज में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आता है, जो शेयर्स उसमें से जो होता है वो उसका शेयर होल्डर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो देते हैं part of the profit out of the total profit earned, some part of the income is distributed to the shareholders. That is called a dividend. Okay, private limited companies, all these things companies ये करते हैं. तो ये और जो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में जो प्रॉफिट जो होता है वो शेयर्स कैपिटल में ऐड होता है. उनको जो ना शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं या डिविडेंड इनको मतलब ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स है उनको डिविडेंड या नहीं तो प्रॉफिट नहीं देते हैं, नहीं शेयर करता है. इट इज़ प्रोहिबिटेड, वो मना है. द मैनेजमेंट ऑफ सच कंसर्न इज डन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर्स. ये मैनेजमेंट कमेटी में एक कमेटी फॉर्म होता है. मेंबर्स बहुत रहेगा, बहुत सारा मेंबर्स हो सकता है, मेंबरशिप ले सकता है. और वो मेंबरशिप लेने के बाद में भी उसको गवर्न करने के लिए, उसको जो मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट ऑफ सच कंसर्न इज डन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. ये जो टोटल मेंबर्स में से सपोज बस 100 या थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स है, उसमें से कुछ मेंबर्स सेलेक्ट करता है, मेंबर्स कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स सेलेक्ट करता है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के लिए. तो वो जो होते हैं दे गवर्न इट इज़ गवर्न बाय द इलेक्टेड मेंबर्स. वो इलेक्टेड मेंबर्स जो मेंबर्स होता है मैनेजमेंट कमेटी में होता है, वो मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड करता है उसका जो एक्टिविटीज़ को जो मैनेज करता है. ओके, अंडरस्टूड नो. तो मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म करने के लिए कहाँ से होता है? टोटल आउट ऑफ द मेंबर्स वो रिप्रेजेंटेटिव्स, वो इलेक्टेड मेंबर्स में जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो मेंबर्स जो रजिस्टर्ड मेंबर्स रहेगा, वो मेंबर्स से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करता है मैनेजमेंट कमेटी में. तो वो मैनेजमेंट कमेटी गवर्न करता है, जो मैनेजमेंट करता है, मैनेज करता है जो ये कंसर्न को, ये ऑर्गेनाइजेशन को. These concerns prepare receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet. वो तो already explain किया हुआ है. Then capital fund is created by such concern. कैपिटल फंड तो क्रिएट करना ही पड़ता है. तो कैपिटल फंड कैसा क्रिएट करता है? इट इज़ मेड अप ऑफ एंट्रेंस फीस, सरप्लस, लेगेसीज एंड डोनेशन, स्पेशली रिसीव्ड फॉर कैपिटल फंड. तो ये जो होता है फॉर एग्जांपल समझ जो भी जो मेंबर्स हो है, सब जो 100 मेंबर्स या नहीं तो 500 मेंबर्स या 1000 मेंबर्स, कितना भी मेंबर्स रहने तो मेंबर्स से कुछ एंट्रेंस फीस लेते हैं और कुछ डोनेशन या कुछ भी रहता है या कुछ स्पेशल फंड होते हैं. ये ऐसा बहुत सारा कुछ एक्टिविटीज़ होता है. कुछ कोई कुछ देते टाइम में, कुछ डोनेशन देते टाइम में बोलेगा इतना कैपिटल, इतना डोनेशन, ऐसा कुछ होता है. दैट यू विल लर्न लेटर. तो ये सब जो होता है दिस आर द कैपिटल फंड. ओके, लेगेसीज एंड सरप्लस है. और उसमें से जो हर साल में जो भी सरप्लस और डेफिसिट रहेगा तो कम होते जाएगा, सरप्लस रहेगा तो ऐड होते जाएगा, कैपिटल फंड बढ़ते जाएगा. सो दैट इज़ क्लियर. द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. Okay, the points of distinction. The 5 distinctions we will learn here. And that is the main thing, and it's very easy, and once you know these points, it is very easy to make the income and expenditure account and balance sheet of the not-for-profit organization.
So let us see the difference between profit organization, not for profit organization. उसका difference, उसका क्या difference है वो तो पहला समझ में आना चाहिए. एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आराम से आगे मीन्स पिकअप कर सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट, टू मेक प्रॉफिट. तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस. देयर इज this organization is set up not for the purpose of making profit, so hence it is called not for profit organization. The primary objective of organization is to provide service. Preparation of trial balance, वो पॉइंट ऑफ डिसीजन सेकंड है. इसमें प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है. ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में द ऑर्गेनाइजेशंस में प्रिपेयर है ट्रायल बैलेंस, whereas not for profit organization do not prepare trial balance. Instead they prepare receipts and payments account. Okay, now third, accounting statements. Accounting statements क्या होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? फाइनल अकाउंट्स, और जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है फाइनल अकाउंट्स, और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. दिस आर द फाइनल अकाउंट्स. दैट्स इट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड फाइनल अकाउंट्स. Whereas in the not for profit organization, receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet. Balance sheet is common, but whereas here you have to see first here in profit organization is trading account, whereas in non-profit organization this is receipts and payments account. In profit organization second is a profit and loss account. Profit and loss account in the case of not for profit organization, income and expenditure account. Third, balance sheet is same, common. Okay, now but the format and all this thing are little slightly different than the balance sheet. Balance sheet is a final financial statement. Okay, net results प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. नॉट फॉर प्रॉफिट का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सरप्लस और डेफिसिट. यू शुड नो व्हाइल यूजिंग दिस टर्म. ओके, अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट्स का बात करते टाइम में उधर इनकम एक्सपेंडिचर बनाएगा तो प्रॉफिट कितना इतना है और नहीं तो लॉस इतना है, वो बोलने का नहीं है. उसके जगह पे व्हाट इज द सरप्लस और व्हाट इज द डेफिसिट. ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा ये भी नहीं होना चाहिए. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बात करते टाइम में इधर सरप्लस और डेफिसिट नहीं बोलना चाहिए, उधर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होते हैं. ठीक है, सो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. ओके, सो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इट इज नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सरप्लस और डेफिसिट. नाउ फिफ्थ पॉइंट, ओनर्स फंड और कैपिटल फंड. ओनर्स फंड्स इंक्लूड ओनर्स इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल प्लस reserves and surplus. Whereas in not for profit organization, capital funds represents accumulated that is subscription, donation, accumulated amount of surplus and surplus shown by income and expenditure account. ये जो सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एक्सेट्रा जो आता है, जो शेयर सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस एक्सेट्रा, वो कैपिटलाइज होता है. वो कैपिटलाइज होता है, और कैपिटलाइज करके उसमें जो एक्यूमुलेटेड सरप्लस था, मतलब जो पहले से जो कैरी फॉरवर्ड करके जो आ रहा था वो सरप्लस है, प्लस जो करंट ईयर का जितना भी सरप्लस रहेगा वो ऐड करते रहता है. इफ़ इट इज देयर इज अ डिफिसिट वो माइनस होता जाएगा. इफ इट इज सरप्लस इट विल कीप एडिंग. तो कैपिटल फंड बढ़ते जाता है. Now let us see how much we can cover. Need for maintaining books of accounts and preparation of final accounts. Not for profit concerns are not engaged in trading activities. We already discussed that. It is not for it is not kept for making profit, so there is no trading activities, no manufacturing or trading activities. Mostly they deal with public money. These concerns collect money such as subscription, donation, grants, entrance fees, etc. from public. This also understands a repetition, so you will come to know better. These concerns are answerable to the society for such money collected and spent. तो जब भी मीन्स जो सोसाइटी जो बहुत सारा मेंबर्स रहेगा, वो मेंबर्स से जो डोनेशन, सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप फीस ये सब जो लेते रहेगा, देन देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो मैनेज करते रहेगा, तो देन देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स. दिस कंसर्न हैज़ द आर answerable to the society or the members.
ओके, मेंबर्स के लिए मेंबर्स को जवाब देना पड़ेगा ना, मेंबर्स दे आर रेस्पॉन्सिबल आंसरेबल टू द मेंबर्स, जो एंट्रेंस फीस दिया है, मेंबरशिप लिया है और सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, रेगुलर सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, ये सब जो उनको जो दे रहे हैं, जैसे हम जो डोनेशन दे रहे हैं, दिस what the funds are used and how much the expenditure incurred, how much income received, how much expenditure they incurred, and after that what is the surplus, ये सब, और funds क्या किया है, यूज़ ऑफ फंड्स प्रॉपर यूज़ किया क्या, या कुछ घोटाला किया क्या, मैनिपुलेशन हुआ है क्या, या स्कैम्स हुआ क्या, ये सब नोट करने के लिए these concerns are answerable to the society and the members. Hence, proper books of accounts are to be maintained. The following are the reasons for maintaining books of accounts by not-for-profit concern. जो कुछ रीजंस जो मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट रखने का रीज़न क्या है, मैं ऑलरेडी आपको जो बताया है, ऑलरेडी इन ब्रीफ में जो बताया हुआ है, बट स्टिल लेट अस सी. वन, टू मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल ओवर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो उसको कंट्रोल करने के लिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ हेरा फेरी या कुछ नहीं तो मैनिपुलेशंस, फंड साइफनिंग नहीं होता है ना, वो सब समझने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का. टू नो द सोर्सेज ऑफ इनकम एंड हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ये कहाँ से पैसा आया है, मतलब इनकम आया है, कोई डोनेशन या कोई बहुत ज़्यादा डोनेशन देता है. फॉर एग्जांपल सब अगर समझो इट इज़ रजिस्टर्ड, ये रहेगा रजिस्टर्ड ट्रस्ट, ये सब कुछ रहेगा, तो क्या होता है उनको कुछ इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, 50% डोनेशन जो इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन मिलता है. तो उसके लिए भी या कुछ पर्पस के लिए भी या कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा. जो सोसाइटी में कुछ अभी वो बड़ा आदमी है, उसके पास बहुत सारा फंड्स हो, उसका पैसा इनकम बहुत है, तो क्या करता है, सब सोचता है चलो ठीक है कुछ अच्छा डोनेशन या कुछ चैरिटी करता हूँ, या तो ये ऐसा थ्रू मीन्स वो डायरेक्टली तो नहीं दे पाएगा, उसके पास टाइम नहीं रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो नहीं ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सोसाइटी है बहुत अच्छा सोसाइटी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत अच्छा से काम करता है, तो उसको वो डोनेट करता है, यानी तो कुछ फंड्स देता है. वो फंड्स प्रॉपर यूज़ किया है क्या, अगर समझो एक 10 लाख मिल गया, वो 10 लाख कमेटी मेंबर्स का घर पे लेके नहीं जाने का है, वो कुछ पर्पस के लिए दिया है, तो वो पर्पस के लिए जो किया है वो कौन सा पर्पस से पैसा इनकम आया है, और वो कौन सा हेड का अंडर वो खर्चा किया है. समझो किसी ने कुछ बताया है ये पर्टिकुलर मेडिकल पर्पस के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल कैम्प के लिए ही है ये जो चीज़, ये जो फंड में दे रहा हूँ, तो उसको वो वैसे ही फॉर एग्जांपल वो मेडिकल कैम्प कंडक्ट करता है, उसमें पब्लिक को कुछ है ना समझो आई टेस्टिंग और स्पेक्स डोनेट करता है, तो इतना इसका पेशेंट्स होगा, इतना मीन से जो पब्लिक को लेगा, बहुत गरीब आदमी लोग रहेगा, उसका जो डिटेल्स लेने का उसको ये देता है, तो समझो उसका एक्सपेंडिचर उसने कुछ 10 लाख दिया है, वो 10 लाख का खर्चा वही पर्पस के लिए किया है क्या करके उसके अंडर में वो लिया है फॉर दिस पर्पस, एंड एक्सपेंडिचर हुआ है वही पर्पस के लिए, तो वो स्पेसिफाई करने के लिए, तो कौन सा पर्पस के लिए जो, और उसके अलावा और जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन किसका वैसे किसी तरीके से पेमेंट रिसीट्स आया है, और कितना उसी तरीके एक्सपेंडिचर किया है, कौन सा हेड के अंदर वो खर्चा किया है, वो सब समझने के लिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है. To comply with the provisions of laws applicable to them, example, not for profit concerns registered as a charitable trust under Mumbai Public Trust Act or any charitable trust act, or cooperative society registered under the Cooperative Society Act has to comply with the provisions of these acts regarding budget, audit of accounts, रजिस्टर्स टू बी मेंटेन एक्सेट्रा. इसके लिए कुछ रजिस्टर्स और ये सब मेंटेन करना जरूरी है, ऑडिट करना जरूरी है, ठीक है, ये कंप्लेंट्स है, रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज़, ये सबको कुछ ये रखना बहुत ज़रूरी है. तो टू नो द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द कंसर्न ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, अभी फॉर एग्जांपल वो 1 ईयर का जो जितना भी है वो उसका वो जो एक्टिविटीज़ होने के बाद में उसमें कुछ सरप्लस है क्या, कुछ डेफिसिट है क्या, ये सब मालूम करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट रखना जरूरी है. टू नो द नेटवर्थ ऑफ द कंसर्न एज ऑन ए पर्टिकुलर डे, उसमें नेटवर्थ ऑर्गेनाइजेशन का, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का नेटवर्थ क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखेगा तो नहीं मालूम पड़ेगा. देन इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स.
टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस एंड मिसअप्रोप्रिएशंस ऑफ कैश एंड असेट्स। ये तो मैं आपको ऑलरेडी मीन्स जो प्रीवियस पॉइंट्स एक्सप्लेन करते टाइम में बताया। टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस मतलब हेरा फेरी मतलब घोटाला, ये नहीं होने के लिए मिसअप्रोप्रिएशन फंड इधर उधर समझो 10 लाख कोई कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया, वो कमेटी मेंबर्स को या नहीं तो दूसरा मेंबर्स को लेके जाने का नहीं है, उसका घर पे लेके नहीं आने का है, वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए स्पेंड करने का है। तो वो फंड इधर उधर नहीं गया है, वही पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ किया है करके मालूम बनने के लिए। और कैश एंड असेट्स, वो कैश असेट्स इधर उधर नहीं गए करके वो मालूम बनने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स और प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सो अकाउंट्स ये पर्पस के लिए रखता है। Now we will continue with the receipts and payments accounts. We'll learn next in the next class, because I don't want to make you more burden on a particular lecture, so it will be boring if it stretch more than 30 to 40 minutes. Suppose there is some sums we are doing, then that time it may extend for further, but still I will try to make it in 30, 35, 40 minutes. Sometimes if there is we are doing any problems to make you understand. When we are doing a workout a sum or a problem, it will take only 10-15 minutes only. But when I want to explain to you to make you understand, it may take more sometimes an hour also. So that time now there will be a slight extension of the class, maybe 40, 50 or 1 hour. Otherwise, no regular classes we will try to make it in 30, 35, 40 minutes. Okay, so now let us conclude, and the next class we will learn receipts and payments account. We will explain that. Okay, now I request all my students to study regularly. रेगुलर स्टडी एक बार रीड होना चाहिए। और इसमें एडवांटेज क्या है, जो रिकॉर्डेड क्लासेस का एडवांटेज क्या है, यू कैन रीड इट व्हेन एवर यू हैव अ मूड, यू हैव अ टेम्परामेंट, जो तो आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रहेगा, मूड अच्छा रहेगा, तो यू कैन सी दैट अपना यू आर मीन्स सब्सक्राइब्ड और चैनल, तो कभी भी आपको जो जाके मीन्स अपना जो उसमें जाके आप अपना जो भी आपको सब चैप्टर देखने का है, पर्टिकुलर चैप्टर का कौन सा पार्ट, कौन सा क्लास ये देखने का है, वो देख सकते हैं। और एडवांटेजेस क्या है, वो आप ड्रैग बैक कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, वापस रीड कर सकते, सुन सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। Okay, so if you don't understand, watch again and again, because I want all my students to score full marks, 100% mark. And that is possible if you put a little bit effort. Most important, you all must make a strong base in the subject that decides your career. See, why I am telling you always, I am just repeating this, because when you put slowly, suppose थोड़ा थोड़ा करके भी आप जो रेगुलर जो स्टडी करते जाएगा, आपको कितना मीन्स 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद में आप स्टॉप करके वापस वो चालू करके उधर से वापस कंटिन्यू कर सकता है। जब भी ये दैट इज़ एडवांटेज। तो वो आप मीन्स उसको रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट टाइम नो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू लर्न। तो उसमें क्या होता है, यू मीन्स और अगर वो ऐसा स्टडी करेगा तो डेफिनेटली 100% मार्क्स स्कोर कर सकता है। कुछ मेरा स्टूडेंट्स है वो 100% मार्क्स स्कोर किया हुआ स्टूडेंट्स है, ISC में, ICSE में सब है। इवन बोर्ड्स में जो अभी जस्ट मैं रिसेंटली क्लासेस मीन्स स्टार्ट करना अपलोड शुरू किया है। Now this I'm just doing an online free service to my to students. I don't know, means I don't see many of the students, but this is a service to the students. Okay, those who get good thing, then they can make their future better. It will be that is the only thing we need, and we need many talented people. Please read again and again, learn and practice to achieve your life's goal. लाइफ में कुछ गोल होना चाहिए, तो आप आराम से मीन्स जो अचीव कर सकते हैं। एक डिसीजन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हर स्लाइड में मैं बताएगा, हर क्लास में मैं बताएगा। 3Ds मतलब डिज़ायर, मतलब एक व्यक्ति के अंदर एक इंटेंशन, मतलब एक डिज़ायर होना चाहिए, एक आग्रह, एक विश होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, ठीक है, एम्बिशन होना चाहिए। तो वो एम्बिशन के लिए डिज़ायर एंड डिसीजन, वो अचीव करने के लिए एक डिसिसिव पावर, डिसीजन होना चाहिए। वो डिसीजन होने के बाद में डिटर्मिनेशन, ये देन यू एक्ट फॉर दैट, तो डेफिनेटली वो अचीव हो जाता है।
ठीक है. I request you all to share my videos to reach more and more people so that many students and public can take the benefit. बहुत सारा students है financially weak students, they may not be able to afford private tuition classes. वो ये जो classes का benefit यूज सकता है. कोई भी ये benefits ले सकता है, कोई भी advantage ले सकता है on जो college going students as well as anybody who want any students, they can take the benefit, or mostly कोई financially weak students can also take the benefit, and maximum benefit those they can the people can take is those who are doing service along with studies. Study भी करने का और घर में जो या कुछ problem रहेगा, they can they may not be able to go to colleges, so वो privately exam appear करता होगा, उनके लिए भी ये जो classes बहुत effective हो जाएगा, बहुत benefit हो जाएगा. और मैं जो ये जो explain कर रहा है, जो classes का जो explain कर रहा है, that will be a professional attachment उसमें रहता है, because we do come with a professional background. तो professional attach means कैसा जो practically जो होते हैं, जो ये सब करके जो आता है, तो that professional touch भी होता है. So it will be helpful to you in the future also. Now my message: help each other to grow better together for a better India. Because means our economy is going very very fast, so we need more talented people. तो share करो, आप आपस में share करते जाओ, continue आपका contacts में यार इसको ऐसा मैसेज जिसको मिलता है तो contact करते जाओ, because in the coming future India require a lot of talented young generation. तो उसके लिए together we can make everything. That is the thing, teamwork. So you share it to the maximum, so that will take that advantage, that our country will grow like that. Please subscribe if not subscribed and yet, and share to your contacts. Thank you.